2020 दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल and as we get all set for the big match today between Pakistan and South Africa, I am joined over here by my dear friend and co-host for the day Amit Arora. Good afternoon Amit. गुड आफ्टरनून साक्षी. ग्रुप 2 में भारत 4 मुकाबले खेला है, सुपर 12 के 3 जीता है, 1 हार, 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है. साउथ अफ्रीका अब तक ग्रुप 2 में अनबीटन है, वर्ल्ड कप में ही अनबीटन है. थोड़ा अनलकी रही थी, पहला मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ ड्रॉ हुआ था, उसके बाद 2 जीत. और पाकिस्तान ग्रुप 2 में 5वें पायदान पर. 3 मैचों में पहली 2 हार, भारत से भी हारा था, नीदरलैंड से जीता. आज बड़ा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका. Yes, indeed, it's a must-win situation for Pakistan today. अगर वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में सर्वाइव करते रहें तो well, the climb to the semi-finals is going to be a tough ask right now, but definitely to just keep themselves surviving, they need the win today. I'm joined over here by two very senior sports experts whom you would have heard many a times on All India Radio. First of all, former India international cricketer Venkat Sundaram. Good afternoon, Venkat. Good afternoon. And senior sports journalist, expert, and always a learner in life is how he always wants to be called. I'm joined by my dear friend G. Raja Raman. Good afternoon, Raja. Thank you, Sakshi. And we are joined by both the captains for the toss. And the two skippers, Mrs. Bavuma and Bubba. And I believe, Bubba, you've got the coin. Oh, hang on. Give it another go. Technique. Heads. It's a tail. Tails never fails. What are you going to do, Bubba? We will bat first and we will try to run on the board and put pressure on them, and pitch look like very decent, and I think maybe later on second inning might be help the spinners. Hasn't gone to plan, obviously. How do you address things tonight? Of course, we give us 100% in this match and trying to win this match, and we will. Boys are confident and looking forward to the match. Have you changed any personnel for tonight? Yeah, we have one change. Unfortunately, Fakar is out. Haris is in the playing 11. Good luck. Thank you, Bubba. Timber, they're going to bat first. Would you have? Yeah, I would have batted first as well. I just think the nature of the surface may be a little bit worn. Yeah, it does look a bit dry. I know there's a little bit of shade of green, but it looks like just grass green that's been rolled in. So yeah, we would have wanted to bat. Runs on the board is always an advantage. But in saying that, we have to bowl. We'll have to do that quite well. We've been doing it quite well, obviously, in the games. I'm leading up now. So restrict them to a good total and try chase it down. Things are going well for you guys, clearly, but for both, it's interesting. Some of your captains have been under the pump a little bit. How are you coping with things? Yeah, look, I mean, the form is not there. Look, I'm fortunate that I've got a great bunch of guys at the moment. So in terms of support, in terms of confidence, there's nothing short that I'm getting from those guys. The team is doing well as well, so that kind of helps as well. But I mean, I'm still positive. I still believe good things are around the corner. And have you made any changes to your side? Yeah, we've got 2 changes. One forced change in David Miller. He's out with an injury. It's precautionary, I would say. Clausen comes in for him. And then Tabrez Shamsi comes in place of Keshav Maharaj. Oh, nice one, Timmis. Good luck. Have a goodie. Cheers. All right, news from the centre is that Bubba, they've won the toss, going to go up front and bat first. जी, तो खबर ये है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता है और वेंकट पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय. नहीं, ठीक है. They have to put runs on the board and try and defend it like India did yesterday. So I think now the trend has changed. Earlier teams that won the toss used to field first and then try and restrict the score and chase it. Now it has changed completely. We are seeing that teams are preferring to bat first, and we are finding on these wickets, with some help for the new ball bowlers, chasing becomes more difficult as the match progresses. However, there's no threat of rain today. It's nice and bright. Yes. The forecast is good. Yes. So we should get a full game in without any rain interruptions. And that's helpful. South Africa will be very happy to hear that, Raja. Definitely, but they would have liked to bat first because the match is being played on a used track. जहाँ पे पहले खेल चुके हैं मैच, वहाँ पे अगर आप खेल रहे हो तो the spinners will come into play. And in the second half, it can get very challenging for them with the Pakistan spinners expected to do a good job for them. But they'll have to score high and put pressure on South Africa. So it's going to be interesting. No rain is good news for all of us, especially for our listeners, because पूरे 40 ओवर का अच्छा क्रिकेट हो जाए. Also, this match is of interest to all of us Indians. Anybody who's tracking the Indian side will also have an eye on this game.
Yes, of course. And when we mention that, first of all, fingers crossed that it doesn't rain. But let's not forget it's Sydney. Anything can happen on any given day. Oh, it's Melbourne where it Yes, is yes, raining. it's Sydney Melbourne is today. okay. Yes, correct. Yes. So we are looking at that. But still, given how things have been in Australia so far and unpredictable, here's hoping that it turns out to be a day of no rain. But now, quickly coming to you, Venkat, Fakhar Zaman has been ousted, and we have Mohammad Haris coming in now. You think it's going to be definitely a place which is going to pinch Pakistanis, or they'll put that behind them? Look, when you're playing a fresh match, all these things don't matter. You go with the team that you have. And Pakistan has got a good fast bowling attack. They need runs. अगर रन बन जाए उनके 150-60 रन तो उनके पास bowling है जो साउथ अफ्रीका को थ्रेटन कर सकता है. 150, लेकिन एक 160. चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ जो कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में दे आर वेरी सिमिलर टू साउथ अफ्रीकन कंडीशंस. दैट इज व्हाई दोज प्लेयर्स आर एबल टू प्ले इवन अगेंस्ट इंडिया ऑन एट पर्थ वेयर द बॉल वाज डूइंग अ लॉट. उनके बैट्समैन they were able to manage, though they lost 2 quick wickets in the first over, but still they came up with 150 runs which they needed to get. So I think उनका लिए थोड़ा पलड़ा भारी है उनके तरफ. उनका फील्डिंग बहुत अच्छा है. जी बिल्कुल. तो ये पूरा टूर्नामेंट में हमने देखा कि उनका बॉलिंग तो है ही और फील्डिंग भी अच्छा है. जी बिल्कुल. देखिए T20 वर्ल्ड कप तो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और उसका प्रसारण आप आकाशवाणी पर उसका आनंद ले रहे होंगे, लेकिन एक और वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. जी हाँ, नया महीना जब आएगा दिसंबर का, तो 4 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मेंस ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो हैं उनका वर्ल्ड कप शुरू होगा. और इसके बारे में आइए और जानते हैं, क्योंकि फ़ोन लाइन पर अब हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंतेश, जो कि अध्यक्ष हैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के. डॉक्टर महेंतेश, स्वागत है आपका. Namaskar, sir, and hi to all the listeners of All India Radio. I'm extremely happy to be a part of this live show. We are also very happy to have you, sir. So, a battle between 7 countries that includes India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, New Zealand, South Africa. Tell us more about the World Cup. Yes, this is the third T20 World Cup for the blind. First and second were held again in India only, and India had won both. So this is starting coming December. 4th, the teams all would be arriving. 5th, we have a grand inauguration. 6th onwards, we'll have league come knockout basis matches till 14th. Each one will play the match against the other country. And 15th, 16th, we'll have semi-finals. And 17th, the grand finals is going to be played in Bangalore Chinnaswamy Stadium. And inauguration is going to be in Babu Devilal Stadium, New Delhi. Right. Tell us more about the Indian team and our skipper, Ajay Reddy. Yes, so we have picked one of the best team for the country. Ajay Reddy, the captain, who already has won 2 World Cups for us, second T20 and 5th ODI in 2017 and 2018 respectively. And we have picked 17 players along with him. So the team is quite confident and a strong team. So in blind cricket, we have 3 categories, B1, B2 and B3. So B1 are completely blind. 4 will be there in the team. B2, 3 who are partially blind, and B3, 4 number of blind partially sighted. So this team is from 10 different states of the country, and after various selection trials and levels, our selection committee has picked one of the best team. Right. I'm very confident India will retain the 13-20 and we will be heading for the hat-trick. Right. We've got Venkat Sundaram, former cricketer, and G. Rajaraman, sports journalist, with us in the studios. Venkat, big achievement, defending champions India. Yeah. Not only that, this blind cricket is immensely popular. You have no idea how popular it is, not only in India, but in, say, subcontinent. Pakistan has a good team. And India-Pakistan finals have taken place many times. And it runs close. 1 run, 10 runs, that type of thing. It's not given, that this team is going to win or that team. And it's played very competitively. I saw some matches and it's amazing to see these, players, the amount of effort they put in, the type of cricket that they play, the commitment with which they play, despite their handicap, It's so deep. We know Pataude, Colin Milburn, they played with one eye. Imagine if you're totally blind or you're partially blind in both eyes, how difficult it would be to play the game. True. And yeah, really, I appreciate Venkat sir. Yeah. And I grew up listening to you playing for Delhi in early 80s. I still remember you opened a few times, I rehearsed. Yes. So radio commentary has given a lot of motivation to me personally and to most of my visually impaired cricketers. Yeah. Whatever cricket we have learned and followed, it's all just because of radio commentary. And we play with
tremendous passion, as you said, and we focus on the ball because ball is something very important in this game for us because it makes noise. Yes. When it moves. I would like to also say that when I played cricket for Delhi, you just mentioned it, that there was a blind school right behind the ground in Kotla. And all those students would come and watch us and, talk to us. And, we knew that they were handicapped. We could obviously, it was pretty obvious. But they were very passionate even in those days, in the 70s and 60s. I'm talking about long time back. But they used to come and watch, and they would watch till the end of the game, and they would discuss cricket with us. And then I know how this movement of yours, I call it a movement, has come up. And I'm very happy that the BCCI is also supporting blind cricket and handicapped cricket also, Yes. So, and Ajit Wadekar was a great patron of handicapped cricket. He did a lot for them, and he was very passionate about it. Right, Raja? Yeah, just to continue, Venkat sir, for a minute. We have got the good fortune of having Yuvraj Singh as the brand ambassador for the third T20 World Cup. And the first and second we had Saurav Ganguly and Rahul Dravid. And as you rightly said, even India-Pakistan lost India's victory. I followed entire game through your commentary. Right. And Raja, we wanted to ask you one thing, that it's a long journey that this has covered. Should we say that especially abled cricketers have come away, what Venkat just mentioned also, that it's a movement in its kind. But given the fact, the journey as a sports writer and a person who's covered sports all his life, for you also, you would have seen that this has been a very long journey for them. There's no doubt about it. I will only take my hats off to all those who play cricket, despite the challenges that they face. I can't imagine closing my eyes and hearing a ball coming towards me and striking the ball. Right. 99 times out of 100, I will miss the ball. If you blindfold me and ask me to do that, I will never be able to do that. So hats off to everybody who plays the game, who loves it so much. और हमारे साथ इतने सारे श्रोता जुड़ते हैं जो देख नहीं सकते, unfortunately for them. But they are more passionate than many of us, and they know the nuances of the game. So I take my hats off to them, and for playing the sport that they love so much. ये नहीं कि घर बैठे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि एक challenge है हमारे सामने. They are inspiring everybody, and they will remain inspiration. So thank you very much, sir, for doing this for all of us. जी, तो डॉक्टर महेंद्र, sir. बहुत-बहुत बधाई आपको. This is the ball which has made difference in our life. Because till 1990, we had no ball for ourselves. We used to play with every possible object, and we wouldn't have played the competitive game. So I request that through you, All India Radio, please come and encourage this game. We'll be playing across India. Please follow our Facebook and social media. blindcricket.in is our website, and we have social media. So once again, big thanks to All India Radio for having me, and thanks to Venkat sir and Raja sir for appreciating what blind cricket is and blind cricketers are, and the anchor also. जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर महेंद्र. तो ये तो थे डॉक्टर महेंद्र, जो कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष थे. और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 4 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक भारत में वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड आयोजित होगा. और आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं blindcricket.in पर जाके, और समय समय पर साक्षी आकाशवाणी पर तो हम बताते ही रहेंगे. Of course, Amit Hanji, and as they say, where there's a will, there's always a way. There'll be no stopping the human spirit, and that is what we celebrate. Sports celebrate in general, and आज हम उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देख रहे हैं. Now coming back to the game that we have today, Pakistan और South Africa. Just a quick reminder for all our listeners once again कि पाकिस्तान ने आज टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. Now Venkat, I'll come to you and ask you कि South African pace has been extremely strong. We have seen this throughout the tournament. They were being called the underdogs, but that is not one of the reasons why they have shined bright so far. It's because of their paces. But what Raja mentioned, that this is a used pitch, and hence the spinners are going to come into play. Do you think that will put the South Africans today at the back foot? Not really. उनका bowling जो है बहुत अच्छा है. जी. और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका का नोटिया इज द फास्टेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट. करेक्ट. तो उनके 3-4 बॉलर जो हैं उच्च श्रेणी के हैं. तो मैं समझता हूँ कि उनका बॉलिंग अटैक जिस तरह है, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर शेकी है. आप देखिए पहले 6 ओवर में उनके 2-3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं. करेक्ट. और जो क्रूशल ओवर्स है वो 6 और 16 के बीच में, उसमें आप ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बनेगा. तो इस में देखना पड़ेगा इस मैच में कि वो कैसे हैंडल करते हैं, कितने विकेट. देखिए कल जब मैच हुआ इंडिया का भी यही हाल था. लेकिन कल
6 overs में वी लॉस्ट ओनली 1 विकेट रोहित का, और उसके बाद पार्टनरशिप हुआ बिटवीन कोहली एंड राहुल, तो दैट टर्न द टाइड इन इंडियाज फेवर। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं अमित विद राजा ऑल्सो, जो बात अभी वेंकट कह रहे हैं कि टाइट टर्न हो गई एंड दे लूज अर्ली विकेट्स, डू यू थिंक इट्स समथिंग दैट विल कम इनटू प्ले टुडे आल्सो? बट उससे पहले हमारे साथ अमित एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, यदि आप फ़ोन करना चाहें तो नंबर नोट करें 011 दिल्ली के एसटीडी कोड, और नंबर्स हैं 23421084, 23421085। पहले श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी अमित जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं? जी मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर मध्य प्रदेश से। जी विपिन जी, क्या सवाल है आपका? जी सर मेरा सवाल सर ये था कि अभी तक बहुत सारी टीमों में देखा जा रहा है कि ओपनिंग नहीं चल रही है, उसमें एक पाकिस्तान भी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कुछ नया होगा और अच्छे से पाकिस्तान खेलेगी, और मैं यही चाहता हूं कि आज पाकिस्तान जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका जीतेगी तो टॉप कर लेगी और इंडिया को फिर उससे नुकसान होगा, और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिलना नहीं चाहिए, इसलिए आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए। शुक्रिया विपिन जी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से नहीं मिलना चाहिए, उसको बात को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैम, मैं आपका रेगुलर श्रोता और आकाशवाणी का पुराना श्रोता, सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ मैम। बसंती लाल जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो पर। क्या कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? जी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल तो छोटी छोटी टीमें उथल पुथल कर रही है, तो इसमें क्या पाकिस्तान हार सकता है क्या? आपने साउथ अफ्रीका को छोटी टीम बना दिया। माय गुडनेस, दैट्स अ वेरी बिग असम्पशन। आई थिंक वी हैव वन मोर कॉलर ऑन द लाइन विद अस। हेलो हेलो, हाय अमित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। गाँव से सिंगापुर सरायरासी जनपद अयोध्या से मैं कपिल देव बात कर रहा हूँ सर। जी कपिल देव जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर वैसे तो हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप स्टूडियो में काफी दिन के बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कपिल जी। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है तो ना केवल आकाशवाणी पर आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी ये जो विशेष कार्यक्रम हमारे होते हैं, फर्स्ट बॉल 2020, फ्री हिट 2020 और हीरो ऑफ द 2020, इसका आनंद आप ले सकते हैं। तो वेंकट जी, शुरू करते हैं विपिन के सवाल से। पाकिस्तान की बल्लेबाजी, आज मोहम्मद रिजवान बाबर आजम तो ओपनर हैं ही, फ़खर जमान चोटिल हैं, उसकी जगह मोहम्मद हारिस आए हैं विकेट कीपर बैटर। शान मंसूद, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम शाह। कैसे देखते हैं बल्लेबाजी को? देखिए, बड़ा शेकी बैटिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये कंडीशंस उनको सूट नहीं करती। ये सब कॉन्टिनेंट और यूएई में अच्छे खेलते हैं, यहाँ पे जहाँ बॉल मूव होता है तो आप देखिए इनको बहुत दिक्कत हो रही है, और शॉर्ट बॉल पे ये आउट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको केयरफुली खेलना पड़ेगा पहले 6 ओवर में। अगर ये सर्वाइव कर दे और विकेट्स हैं, तब तो वो शान मसूद, इफ्तिकार, दीज आर द पीपल हु आर स्कोरिंग। बाकी कोई रन तो बना नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए थोड़ा बहुत स्टार्ट। और देखिए, ये मत भूलिए कि बाबर आजम और रिजवान क्लास प्लेयर हैं। वो जिस दिन थोड़ा सा सेटल हो जाएं और कंडीशंस को हैंडल कर पाएँ शुरू के 4-5 ओवर, दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ प्लेइंग बिग इनिंग्स एंड दे आर डेंजरस, बिकॉज ये जब इनका स्टार्ट हो जाए 40-50-60 रन का, तो बैटिंग बैट्समैन अपने खुल के खेलेंगे और फिर मैच का मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ मत भूलिए कि ये ग्राउंड जो है ये थोड़ा स्लो है, ये पिच उतना तेज़ नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ा जिसे कहते हैं टेनिस बॉल बाउंस मिलेगा यहाँ पे शुरू में। बॉल माइट कम लिटिल स्लो ऑफ द पिच इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, इट माइट स्विंग ऑल्सो लिटिल बिट, उसके बाद इट विल सेटल डाउन। तो पहले 3-4 ओवर आराम से खेलें। ये वाइट बॉल तब भी 4 ओवर ही स्विंग होता है, उसके बाद तो हमने स्विंग देखा ही नहीं। ट्रू। एंड राजा, हमारे जो अगले कॉलर थे उन्होंने ये बात कही थी कि हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में कि छोटी छोटी टीमें कई बार अब की बार उथल पुथल कर दे रही हैं। एंड वुड पाकिस्तान बी इन अ सिमिलर सिचुएशन टुडे? Well, clear-cut assumption, South Africans being one of the smaller teams, but clearly that's not been the case so far. Your view on that? I don't think the caller Basanti Lal ji was referring to South Africa as a small team. He was probably referring to the overall scheme of things where teams have smaller teams have created and they have created a lot of ripples. So he's wondering what's going to happen today. I don't think he means any disrespect to South Africa, which has not lost a single game so far. Correct. But I'll go back to the conditions. Yeah. This is Sydney, and Sydney is probably the closest to Asian conditions that Pakistan is going to get.
And the other factor is that Rizwan has already got runs in the last match. And he will be high on confidence. They just need Babar Azam to get ticking. He did look like he was getting back some kind of touch in that last game. If he scores a few runs, and as Venkat pointed out, if they can last the first 6 overs, there will be a good score on the board, and Pakistan can then hope to do a good job. The Zimbabwe attack was more or less similar to, in terms of pace bowling, in terms of bounce, more or less similar to what they can expect today. Of course, Nokia is going to be the fastest bowler on view, but it'll be interesting to see how they play the first 6-7 overs. Try and not lose wickets so Pakistan can then do a thing. But एक लिसनर वो भी है बिपिन जो कह रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए जी। हम तो चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीते क्योंकि सेमीफाइनल में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, आपको जीतना है। करेक्ट। सामने जो भी आ जाए आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और जीतना है। इफ साउथ अफ्रीका विंस, इंडियाज चांसेस ऑफ गेटिंग टू द सेमीफाइनल इम्प्रूव, because if Pakistan wins then triple tie hoga, net run rate mein India is far behind. So as a lover of Indian cricket, I want South Africa to win and in today. fact Amit, on any given day the Indian fans would want कि हम न्यूजीलैंड को सेमी से मिले, ना कि ऑस्ट्रेलिया को on their home ground on conditions where they are very much familiar and they know that very well. So New Zealand would still be a better option if Indians were given a choice, especially the fans. जी, दक्षिण अफ्रीका के अंतिम 11 भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज 2 बदलाव हैं वहाँ पर। क्विंटन डे कॉक, पेम्बा वबूमा उनके कप्तान ओपन करेंगे, फिर रोजू हैं, एडन मार्करम हैं जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था, लेकिन डेविड मिलर जिन्होंने बहुत ही अच्छी 59 नॉट आउट की बारी खेली थी इंडिया के खिलाफ, वो आज नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर क्लासन आए हैं। और फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, वेन पानल, केशव महाराज नहीं है, उनकी जगह लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर तबरेज शमसी हैं, कगीजो रबाडा, डुंगी एनगीडी, और जैसा कि वेंकट ने कहा कि नोकिया शायद सबसे प्रभावी गेंदबाज होंगे। तो ये टीम क्या काफ़ी अच्छी है, इसने भारत को भी हरा दिया। इट्स अ गुड टीम, देयर इज नो डाउट। मैंने कहा ना कि इनके कंडीशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल साउथ अफ्रीका से मिलते जुलते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हमने इन्हें T20 वनडे दोनों में हराया था। वो अलग हमारी होम ग्राउंड्स थी, वो उसका कोई महत्व नहीं है। देखिए ये T20 जो है ये फॉर्म ऑफ द डे है। आप आज उनको हरा सकते हो, कल उनको हार सकते हैं, तो ये फॉर्म ऑफ द डे पे चलता है। तो इसमें देखिए तो किसी ने लिसनर ने कहा कि छोटे टीम भी हरा सकते हैं, बड़े टीम को अपसेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्रिकेट है कि यहाँ पे सारे चीज़ें बराबर हो जाती हैं, फॉर्मेट ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको मिलर का लॉस बहुत बड़ा लॉस है। मिलर इज बैटिंग ब्रिलियंटली एंड ही इज इन टॉप फॉर्म। नॉट ओनली हैड अ गुड IPL, ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड ही इज मैच्योर्ड एज अ प्लेयर। आप देखें ना, वो रुक के खेलते हैं, शुरू में आराम से खेलते हैं और रोटेट करते हैं, स्ट्राइक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। बीच में लेफ्ट हैंडर आने का इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ वो लॉस बहुत बड़ा लॉस है। अब देखना है कि क्लासन भी अच्छा प्लेयर है, वो कैसे खेलते हैं इस मैच में, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन पे आ गया है। क्लासन की बात कर रहे हैं हम, तबरेज़ शामसी की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने सारे श्रोताओं को बता दें कि इस समय दोनों ही टीम्स मैदान पर उतर चुकी हैं और यहाँ से अब दोनों ही देशों का नेशनल एंथम भी होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम, दैट्स व्हाट वी होप टुडे। 2 स्ट्रॉन्ग नेशंस कमिंग टुगेदर, अ मस्ट विन सिचुएशन डेफिनेटली फॉर पाकिस्तान इफ दे वांट टू सर्वाइव इन द टूर्नामेंट, एंड साउथ अफ्रीकन्स ऑन द अदर हैंड वुड वांट टू कंटिन्यू देयर विनिंग स्प्री बिकॉज दे वुड वांट टू फिनिश ऑन द टॉप 2 स्पॉट इन अ क्लीन वे। देखिए इंडिया तो पक्का है, आ ही जाएगा राजा। कल did you enjoy that 34-meter throw by KL Rahul getting Litton Das run out? Oh my God! You enjoy all of the cricket. If you have to pick one moment, then it had to be that Virat Kohli straight 6. Okay. Yes. Maybe I'm slightly leaning towards I the would share the batting, thought. but there were some great catches that the Indian took. They were very smart on the field, and they were very sharp as well. So it was lovely to see that run out. And here's a secret story behind that throw from KL Rahul from Venkat. वो आप देखिए कि अपना जो विकेट कीपर है बेचारा, ही इज़ बीन अंडर प्रेशर, दिनेश कार्तिक, और आप रीप्ले देखिए उस थ्रो का। दिनेश कार्तिक इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विकेट एंड पॉइंटिंग टू द नॉन स्ट्राइकर एंड कि आप वहाँ थ्रो करो। सो दैट्स क्रूशियल, यू नो, यू आर थिंकिंग अबाउट द गेम इवन दो द गेम इज नॉट गोइंग इन योर favor. Individual favor. Correct. Very beautifully put together. Team game is what we call cricketers. Thank you so much, Raja. Yeah. Thank you, Venkat. Thank you, Amit. Thank you very much. हमारे सभी लिसनर्स को हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए इस शो पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सुनते रहिए क्योंकि अब हमारी कमेंट्री टीम आएगी आज के मुकाबले की कमेंट्री लेकर आपके लिए। फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और VK तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
But this time Kohli would